on ball. A 20-minute time limit. Approaching the ring from Freehold, New Jersey, weighing 234 pounds. रात 8 बजे और ब्रैडवे बनेगा हमारे महल का राजा। ये तो कोई जोकर लग रहा है मुझे। कैसी हो मेरी रानी? वाह। और ये लड़का बनेगा घिसे हुए दिमाग वाला थानेदार। ओह जरा एक मिनट, घिसा हुआ दिमाग? और हाथ में होंगे मोटे दस्ताने। और छोटी फैल्मा बनेगी बर्तन धोने वाली। शहरी महंगे दामों अशिया खरीदने पर मजबूर है। दूध 110 की बजाय 130 रुपए, दही 120 की बजाय 180 रुपए और छोटा गोश्त 1200 की बजाय 1500 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। अगर हकीकत में थोड़ी सी अब तो हो, मगर उसका जरिया क्या बनता है? मुझे आइडिया जा रहे हमें नहीं पता। जगह पर हम वहां चुराते रहे हो, लेकिन यहाँ पे अभी कुछ I'm not sure he put that much thought into it. Yeah, I don't think Rory, he gives a fiddler's fig about that kind of stuff. I think he's looking forward to a little payback on QT. Kaze Nina Ray, his battle cry, become the wind, and Suzuki looking to QT's face. Well, I think QT realizes he's in over his head. QT is in there. That is definitely the look. The former never open weight champion of New Japan Pro Wrestling, a former GHC heavyweight champion in Pro Wrestling Noah, a former Triple Crown champion in All Japan Pro Wrestling, a former King of Pancrase, and a former Ring of Honor World Television Champion in Minoru Suzuki, just to name a few accolades. He's calling him out right to the middle of the ring. QT is very apprehensive about stepping. Oh, look at this. Come on, get it. Get those kicks up. Well, it's smart on QT's part. You definitely want to attack first in this situation. Yeah, but I wouldn't wait long like that. QT Marshall. Oh, he's going to throw the clothesline. Suzuki blocks it, and now comes over the ropes and just wrenches the arm, trying to tear the shoulder out of socket. And look at this. The cross arm breaker in the ropes. QT Marshall is tapping out, but luckily for QT, or I guess unluckily, it was in the ropes, so it wasn't an illegal hold technically. Looked like he got electrocuted when he got hit. Knife edge chop. I just slapped QT's heart right out of his back. Minoru Suzuki, a student of Carl Gotch, who's also known as one of the toughest men ever in professional wrestling. Oh, he's on Goofy Street. Look at him doing the dance. Dazed, and Suzuki sizes up QT Marshall. Get him back in there, Mr. Suzuki. Minoru Suzuki almost playing with his foot. Oh, look, wait a second. Camarado distracting Paul Turner and opening the door for QT Marshall. And look at this, Paul Turner ejecting Camarado and Aaron Solo from ringside. Well, I'm actually surprised the referee actually did something. The Zebra finally earned his paycheck. Good for Paul Turner for growing the set. Camarado is a pretty tall guy. Why does he walk on his tippy toes? And wait a second. QT now just getting in the face of Minoru Suzuki, just trying to. Oh, that wasn't smart. That's a pretty dead-eye stare right there. Suzuki's not doing any of that. Well, this is not a guy you want to get in a trading situation with, QT. I've seen him get hit with a lot more than that. Yeah, Suzuki's like forged iron. Right now, he's getting warmed up.
Minoru Suzuki is somebody that fought Ken Shamrock to a 30-minute time limit draw. That's pretty impressive. I know Ken Shamrock very well. That's impressive. He and Suzuki beat the stuffing out of one another. And now, QT. Uh-oh. Hey, I'll do that. He said, give me your best shot. And he gave it to him. Suzuki with an elbow. QT laying in some elbows of his own, but right. Well, there's not a lot of muscle around him. yeah, big equalizer there. QT with a comeback lariat. Far leg hook. Suzuki able to kick out. You know, QT is like beating on an iron pot right now. Yeah, I mean, He looked a little perplexed after he threw that shot to the throat. think back didn't work to Dynamite a couple weeks ago, the match between Minoru Suzuki and Samoa Joe. You want to talk about a slugfest. Oh, wait, Suzuki ducks under. Nathan's Oh, no. This could be the beginning of the end for QT Marshall. The sleeper, the elbow strike, and now Minoru Suzuki. He's got him vertical, and he drops it with a Gotch-style pile driver. The cover, and the win. There is your winner, Minoru Suzuki. You know, there's all the sayings when I grew up. My dad used to talk about somebody being tougher than a bag of hammers. I would have to say Suzuki is one of those guys that is tougher than a bag of hammers, literally. Tougher than a bag of hammers, and he hits like a ton of bricks. Minoru Suzuki picking up the win here tonight on AEW Dark Elevation. He drove QT like a nail. Chaos Project. And speaking of chaos, Serpentico and Luther, the original Death Dealer. The amount of years experience that Luther has, he's been wrestling since what, 1987? He has competed around the world. The Acclaim. Yo! Listen! We are. Listen. I have no choice. Yo! It's the Acclaim, and we're going for the dub. A ring full of losers. Who is that? The Cubs? The Dark Order again? I'm getting bored of this. Y'all lose more matches than Barry Horowitz. Hey, yo, the Blondes are on the show. Never thought your TV time would get so low. And I know you're politicking for a spot, but you like Aaron Rodgers, you'll never get a shot. Oh my goodness! Anthony Bowens, Max Caster, the Acclaim, teaming up with Chaos Project. You see what he did there? I saw what he did. He's making friends wherever they go. He said Aaron Rodgers could never get a shot. I got it. And now we got traps. Until Max Caster. Well, there's like 30 of them over there, so, you know. Like Wu-Tang Clan. Yeah. Platinum Max Caster tags in, and the Blondes and the Acclaim have had their share of matches and I mean really a big rivalry that's raged over the last year or so here in AEW. Man, he was chopping him down like a tree. Anthony Bowens is such a striker. Yep. Super aggressive, elbows, forearms, knees, feet, whatever. And he's got such powerful legs, Bowens does, that I mean he's able to generate so much force, just so much damage with all of his strikes. And here comes poor Serpentico. Oh! Why? Come on, man. Hammer throw into the corner. Serpentico very obviously dazed. Oh, no. And John Silver, go! Get cheered later. Stay in the groove. John Silver, high cross body. 2, no. Oh, man, that's too good. I think that's just goes to Serpentico's resilience from the
beating these takes over the years. He didn't know where he was. He just knew he needed to kick out. Alex Reynolds with the assist over the top. The acclaimed and Luther get wiped out. Serpentico trying to steal one here. He's got a handful of trunks. Wow. Too much power in John Silver. Oh, look at that. Silver with the trip and that kick to the back of the head. Silver's got Serpentico up on the shoulders. He's taking him for a ride. Spin doctor. Silver covers and scores the win. And John Silver. All a surprising amount of chemistry out of Silver, Reynolds, and the Blondes. Great athletic ability, great teamwork. What amazing. Concoctions, resilience, retribution in the air. And then you get up one more time. It's all about who wants in the most. The all AEW Elite Wrestling is now all in action. Meet the rambunctious Elite exclusive. कैसा शोर मचा रखा है ये? वो कुछ नहीं, बस दरअसल ऐसे ही हम लोग। ये देखो पर अच्छा कमाल कर दिया तुमने लड़की बनके, हाँ? लेकिन ये कोई सबूत नहीं है प्यारी दोस्त, समझ गई? होशियार नक्चड़ी लड़की ने अगला सबूत भी ढूंढ लिया है। जोरदार तालियां हो जाए। बंद करो ये पॉम्पो वरना। आई एम सॉरी ताई, हम लोग तो वाकई जासूस बन गए स्कूपी। डेफनी सुनो, कोई प्रॉब्लम जरूर है। टेम्परनीस के रूम का दरवाजा तोड़कर चोरी हुई है। थानेदार जी आप माफ कीजिएगा, ये डेफनी कौन है? तुम थानेदार हो फ्रेड, क्या भूल गए हो? अब बंद करो ये नाटक, मेरी बात सुनो। अब ये खेल कोई खेल नहीं रहा डेफनी, हमारे दरमियान कोई असली भूत घूम रहा है। तुम गेम खेलने नहीं आओगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा, देख लेना, ठीक है? देखा, वो असली भूत है। खामोश रहो, नकली है वो। सुनो सरकटे भूत, प्रिंसेस ये हुक्म देती है कि इसे छोड़ दो। डेफनी संभल कर। शायद तुम ठीक कह रहे हो फ्रेड। भाइयों और उनकी बहनों, ध्यान से सुनो। कार्टून नेटवर्क पर हुई है न्यू एंट्री। लेकर आए हैं कुछ नए कैरेक्टर्स, लॉट्स ऑफ फन एंड एडवेंचर। What's up, Dad? तो हो जाओ रेडी, ढेर सारे नोक झोंक से भरे फैंटस के लिए। पटक 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 पटक। Hey! Daffy Bunny जिंदाबाद। देखिए ये न्यू शो अब उर्दू में, द लूनी ट्यून्स शो, एवरी डे एट 4:30 PM, ओनली ऑन कार्टून नेटवर्क। राबिया का बेस्ट फ्रेंड, उसका कैमरा। वाह! और कितना खींचोगी? अम्मी, दुनिया को पाकिस्तान की अलग तस्वीर दिखानी है, उसकी खूबसूरती की। जब तक दिखाऊंगी नहीं, रुकूंगी नहीं। मैं इसके ख्वाबों के बीच किसी को नहीं आने दूंगी, जरासीम को भी नहीं। इसीलिए लाइफ बॉय। बड़े ख्वाबों को दे लाइफ बॉय की बड़ी हिफाजत, जो दे जरासीम से 100% यकीनी हिफाजत। अम्मी, मेरी पाकिस्तान की तस्वीर जीत गई। सॉफ्ट केक, डिलिशियस क्रीम और स्मूथ चॉकलेट का कॉम्बो, बिस्कॉनी फ्लो, फ्यूजन मजे का। कम ऑन माँ, दिस इज इजी। अभी तो हार्ड मोड भी है। इजी? क्या हार्ड? हाँ? दांतों के लिए बिस्किट चबाना इजी, लेकिन कैरेट हार्ड। इसीलिए कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन, ये दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाए, उनका खोया कैल्शियम लौटाए। जब दांत स्ट्रॉन्ग तो मैं स्ट्रॉन्ग। कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ।
जो कर नहीं सका कोई मैं वो कर दिखाऊंगा, मछलियों के साथ में मैं मचलाऊंगा। बबल में रहते हुए बबल में फुलाऊंगा, रोकते रह जाओगे मैं हाथ में न आऊंगा। ये आज ख्वाबों के बड़े बबल फुलाएंगे तो कल उनको जी पाएंगे। कैंडीलैंड बबल बॉम, बबल में गुड न्यूज, मिस्टर बीन अब आ रहा है कार्टून नेटवर्क पर अपने कूल अंदाज के साथ। करेंगे सभी को इम्प्रेस। साथ आ रहे हैं टेडी भी, तो एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि होगा कार्टून नेटवर्क पर मिस्टर बीन का चांद। देखना ना भूलिए मिस्टर बीन दी एनिमेटेड सीरीज, मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 बजे और शाम 6:30 बजे से सिर्फ कार्टून नेटवर्क पर। ग्रेस पांडा और आइस बियर हैं जबरदस्त बियर्स। हम बहुत ताकतवर हैं, इसलिए हमने बहुत से अवार्ड जीते हैं। और वो यहाँ आपकी मदद के लिए है। आइस बियर आपको मैनर्स सिखाएगा, आपको हंसाने के लिए। तुमने ढूंढ लिया उसे। क्या मैं तुम्हें अचार लगता हूँ? क्योंकि मुझे तुम्हारी चटपटी दोस्ती पसंद है। जब भी कोई मुश्किल आए, बूम, जब कंप्यूटर खराब हो जाए तो परेशान मत होना, और जब भी कोई परेशानी आए तो परेशान मत होना, हम साथ हैं तुम्हारे। देखिए वी पेयर पेयर्स मंडे टू फ्राइडे दोपहर 2:30 बजे और रात 9 बजे सिर्फ कार्टून नेटवर्क पर। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन, ये दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। खोया कैल्शियम लेकर, जब दांत स्ट्रॉन्ग तो मैं स्ट्रॉन्ग। कोलगेट स्ट्रॉन्ग। Flo is a cake. My calculation says Flo chocolate है। Flo chocolate है। और पता लगा। फ्यूजन मजे का। चेहरे पे बिखरे मुस्कुराहटे खोने ना दे, हर एक लम्हे को नरमी से थाम ले। रोज पेटल अल्ट्रा सॉफ्ट के साथ गो सॉफ्ट अब सिर्फ 150 रुपए में। सब लोग जल्दी यहाँ से भाग जाओ। सही कहा, रूल के हिसाब से हमें भागना चाहिए। सब इसे क्यों समझे? तो चलो अब तुम भी भागो। मुझे ये गेम बहुत पसंद आया। ऑलराउंडर डिपेंडेंट साइड है या आप थोड़ा बैटिंग हैवी जा रहे हैं? नहीं कल भाई हमारे तकरीबन काफ़ी यंग लड़के हैं, नए आए हैं। कोई एक्सपीरियंस वाला, कोई फास्ट बॉलर है, मैं वकाश हूँ। उसके अलावा सारे यंग लड़के जो अभी एक दो साल से डोमेस्टिक खेल रहे हैं, वो प्रॉपर उनको चांस दिया है और इंशाल्लाह ताला देके अपना डिलीवर करते हैं। कितना टोटल आपको लगता है आसानी से यहाँ गेटेबल होगा चेज करने? आई थिंक 180 प्लस होगा तो इंशाल्लाह हो जाएगा। चलिए ठीक है, गुड लक टू यू। जुनैद से बात करते हैं। जुनैद, आपका भी यही फैसला होता अगर टॉस जीतते? नहीं, हमने बैटिंग करनी थी। बैटिंग करनी थी आपने, तो क्यों इतना डिफरेंस है दो कप्तानों में? आपने ऐसा क्या देखा है यहाँ पे जो इन्होंने नहीं देखा? जो हवा की एक तो फैक्टर है, यहाँ पे कराची में हवा चल रही है, ड्यू फैक्टर भी नहीं होगा, तो चौथी इनिंग में हो सकता है कि मतलब कंफर्म है इस तरह से कि ये विकेट टूटेगा, मुझे लगता है। थोड़ा बहुत हमने देखा कि हुआ था इस तरह से, पाउडर और पफ ऑफ डस्ट दिखा था हमें पहले वाले मैच में। तो आपको क्या लगता है कि कितना स्कोर जो है वो यहाँ पे चेजेबल है आपको लगता है इन कंडीशंस में? क्योंकि हवा चल रही है, ड्यू शायद अभी तक तो नहीं है, ग्राउंड स्टाफ कहते हैं कि 8 बजे तक आ जाती है, लेकिन अभी तो बिल्कुल सूखा है। देखिए 170 180 अच्छा टारगेट था पहले मैच में भी, तो वो एक ही 2 ओवर वो रिलैक्स हुए, तो मेरे हिसाब से 170 180 अच्छा था। काफी नई टीम है आपकी, बहुत सारे यंगस्टर्स दिख रहे हैं, तो कॉन्फिडेंट हैं कि एक अच्छा स्टार्ट करेंगे? जी बिल्कुल, हमारा एक कॉम्बिनेशन है जो 4 डे से जारी है, तो हम कॉन्फिडेंट है बहुत ज़्यादा। चलिए, गुड लक टू यू।
The news from the center out here is that Faisalabad have won the toss and they've decided that they're going to have a ball. तो जिसने जो चाहा वो हासिल करने में कामयाब रहे हैं। टॉस में आसिफ अली कप्तान है, वकास मकसूद। For some time, Chris O'Leary, thank you very much. ना ही सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस देता है बल्कि आपकी पर्सनैलिटी को भी बहुत ग्रूम करता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सोसाइटी से, मेरी रिक्वेस्ट है सब पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को सपोर्ट करें। रामीन शमीम पाकिस्तान ख़वातीन क्योंकि टीम की कप्तान हमारे साथ मौजूद थी। रामीन, यही मुस्बत सोच और इसी एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ती रहें और आपको अल्लाह ताला यकीनन आने वाले दिनों में मौका फराहम करेगा और आपको आपकी मेहनत का सिला मिलेगा। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं और बहुत शुक्रिया हमें स्टूडियो में ज्वाइन करने के लिए। यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। आप ट्विटर पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, आप हम ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv। बस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद यार को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। करना और मुझे थोड़ी हैरानगी इसलिए हुई कि अब आसिफ अली ने टॉस जीतते पहले बॉलिंग की, क्योंकि शायद उन्होंने अच्छे तरीके से पहला मैच देखा नहीं, क्योंकि पिच थोड़ा मुश्किल हो गया था सेकंड टाइम। तो जहांदाद और रजा बैटिंग बहुत अच्छी कर गए, वरना जो पिच था वो थोड़ा मुश्किल हो गया था पहले दिन में। वकास मकसूद ये बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, 73 विकेट्स हासिल कर चुके हैं, 4-35 रन देकर इनकी बेस्ट बॉलिंग है, अच्छे प्रॉस्पेक्ट है। ये इस पिच पे अच्छी बॉलिंग करेंगे क्योंकि इनको एहसास है कि इस पिच पे आपको दूर बॉल करना है, मुंह में और जोन में बॉल नहीं करना है। जी, जो पेस का बड़ा इस्तेमाल करते हैं वकास मकसूद, और इस अंदाज के पिच पे जो कि अब से 1 घंटा कबल मुकाबला खत्म हुआ है, हमने बहुत मरतबा बॉलर्स को वहां पर बचते हुए देखा था, लेकिन ये एक तरह से तजर्बे का मुकाबला है। नौजवानी से प्ले इज द कॉल। नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम का दूसरा मुकाबला शुरू हुआ चाहता है खवातीन हज़रात। वाइड के साथ शुरुआत की है और शायद वक्त लगे, लेकिन ओवर द विकेट गेंद आगे फेंकी थी। हमेशा से मुश्किल होता है राइट हैंडेड बैटर के खिलाफ करना, लेकिन आप बिल्कुल ही चूक गए लाइन और लाइन। हाँ, लाइन और लेंथ में तो चुके, लेकिन आप लेंथ के बाद पढ़ने के बाद बॉल जिस तरीके से नीचे रहा है ये अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि इन्होंने सेकंड बैटिंग करी है। देखिए बहुत नीचे रहा है बॉल ये, और जब पहला बॉल इस तरीके से नया बॉल नीचे रहेगा तो वो डेफिनेटली डाउट डालेगा सेकंड टाइम बैटिंग करने वालों के लिए। अली 18 टीम्स हैं, 63 मुकाबले हैं और ऑलमोस्ट हर दिन मुकाबले यहाँ पर खेले जाएंगे और रोजाना डबल हेडर्स हैं, तो एक बड़ा इम्तहान होगा यहाँ पर ग्राउंड स्टाफ के लिए। और उनको ये पिच नंबर 6 है जहाँ पर मुकाबला हो रहा है, और चूंकि ये ऑलमोस्ट इंतहाई दाएं जाने मौजूद है, इसकी वजह से ऑन साइड की बाउंड्री इस वक्त राइट हैंडेड बैटर्स के लिए, दोनों दाएं हाथ से बल्लेबाज शुरुआत करें उनके लिए मुख्तज़र है, लेकिन इसके बावजूद ये लेफ्ट हैंडेड बैटर दूसरी तरफ से आएंगे अपनी पहली बॉल खेलने के लिए। इनके लिए बड़ी वसी और इस बाउंड्री बन जाएगी ऑन साइड पर जिनको कवर करना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ ये इम्तहान रहेगा ग्राउंड स्टाफ को किस अंदाज से तैयार कर पाते हैं, और खासतौर पर T20 जिसमें आप रन की भरमार देखना चाहते हैं उसमें ग्राउंड स्टाफ कैसे तैयार कर पाएगा। यकीन वैसे तो इन पिचेस को काफी रेस्ट मिला है। आखिरी सीरीज पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका विमेन हमने यहाँ पे कवर की थी, तो वहाँ पे थोड़ी स्लो पिचेस जरूर थी, थोड़ा लो पिचेस भी थी, लेकिन तब से लेके अब तक कोई क्रिकेट हुई नहीं है नेशनल स्टेडियम में, उससे काफी रेस्ट मिल चुका है, अच्छी फ्रेश पिचेस हैं। लेकिन यहाँ पे इस पिच को मैं देखते हुए यही कहूंगा कि ये थोड़ा लो रह रहा है बॉल, ये बॉल भी थोड़ा लो रहा है, ज्यादा पेस नहीं है ऑल्दो वकास की, बट स्टिल नया बॉल है। इस तरीके से पहला दूसरा बॉल लो रहना ये सेकंड टाइम बैटिंग करने के वाले के लिए ये खतरे की घंटी है। बैक किया हुआ है कवर्स में, जहां से निकलने के लिए मुश्किल होगी। इंटरेस्टिंग फील्ड पोजीशन है जहां पर स्क्वायर लेग पर एक फील्डर लेके खड़ा किया है जो कि बाउंड्री से खासे आगे है। बहुत बाहर गेंद, लेकिन एक मरतबा फिर नीचे भी रही और बाहर की जाने मूव करती गई। तो ये फॉर्मेट को 20 साल पाकिस्तान में मुकम्मल होने जा रहे हैं। 2004 में बड़ा फेमस थी यहाँ पर लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में पहली मरतबा टूर्नामेंट खेला गया था,
जिसमें मुल्तान टाइगर्स और कराची ज़ेब्रास के दरमियान जो मुकाबला था, चूंकि वो पहली मरतबा खेल रहे थे, गेंदें पड़ने के बाद बहुत बार रही और एक मरतबा फिर नीचे रही, तो वहां पर 22 डेब्यूटेंट थे। तो वो जाहिर बात है कि रिकॉर्ड तो नहीं ब्रेक हो सकता, चाहे जाएगी कि आप बिल्कुल ही 2 नई टीम उतारें। एक मरतबा फिर गेंद बहुत नीचे रह रही है और इस सूरत हाल में शॉट लगाने के लिए, जुएशी लाने के लिए मुतरादिफ होगा बैटर्स के। अब यहाँ पे जो भी बॉल स्टंप्स के अंदर पिच होगा वो मुश्किलात डालेगा बैटर के लिए, क्योंकि अभी जितने भी बॉल किए वकास ने आउटसाइड दी ऑफ स्टंप किए हैं, लो रहा है, लेकिन इंटरेस्टिंग होगा देखना कि विद इन द स्टंप्स जो बॉल होगा वो क्या करता है, बैटर उसको हैंडल कैसे करते हैं, वो एक्साइटिंग होगा देखना। और अभी आपने जिक्र किया मुल्तान और कराची ज़ेब्रास का जो पहला मैच हुआ, बहावलपुर के प्लेयर्स को ज्यादा मौका नहीं मिला, स्पेशली लास्ट 3 साल जो सिस्टम रहा उसके अंदर शायद 1 या 2 लड़के ऐसे थे जो सेकंड 11 की तरफ से खेले, फर्स्ट 11 में नहीं खेल पाए, इसलिए ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना होगा बहावलपुर को, क्योंकि बार बार ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि आप बड़ी स्टेज पे बड़े ओपोनेंट ब्रॉडकास्ट मैच हो रहा है, तो आपको मैक्सिमम इस्तेमाल करना है इस अपॉर्चुनिटी को। बहावलपुर की अगर हम बात करें, अब्दुल मुकीद का ताल्लुक भी लाहौर से है, अच्छे अंपायर हैं, ये भी ज्यादा अरसा नहीं हुआ इनको इस पीसीबी के लीड पैनल में आए हुए, बड़े मैचेस करते हैं, इनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है, ऑलमोस्ट सभी के लिए काफी सारी अपॉर्चुनिटीज रखी यहाँ पे। इस क्रिकेट की बाहर उतरी हुई है, नॉन स्टॉप मैचेस हैं, बड़ी तादाद में आज मैचेस खेले गए, 63 कुल मैचेस खेले जाएंगे। एक मरतबा फिर ऑफ द बैक फुट निकालना चाहते थे, लेकिन पहला चौका हासिल करने में कामयाब रहे, बड़ा थिक कैच लिया, लेकिन निचले किनारे लेने के बाद गेंद चौके के लिए रवाना हो गई, पहला चौका। लकी रहे वसीम, क्योंकि जोर से मारने गए थे और ज्यादा पेस नहीं है, इसलिए वो दूसरे को बैट इतनी तेजी से बल्ला घुमाया था कि इवन इनसाइड एज भी कैरी कर गया 4 रन के लिए। शायद इस शॉट से थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले, ऑल्दो कॉन्फिडेंस वाला शॉट तो नहीं था, लेकिन क्योंकि रन आ गए हैं 4 तो उससे कॉन्फिडेंस होगा। एक मरतबा फिर, लेकिन अब ये डेलिब्रेट निकालने के लिए गए, बड़ा चेज होगा फील्डर के लिए। वकास मकसूद का पहला ओवर मुकम्मल, फैसलाबाद 8 बिना किसी नुकसान के। तो मुझे याद है, हालांकि मैं बहुत छोटा था उस वक्त अली, लेकिन वो जो इनॉग्रल फॉर्मेट जिसकी हम बात कर रहे हैं, फैसलाबाद वुल्व्स ने उसको जीता था, और इनफैक्ट उसके बाद जाकर उन्होंने एक इंटरनेशनल क्लब कंपटीशन में भी फतह हासिल की, लेकिन उसके बाद सियालकोट स्टैलियंस बन गई थी फुटबॉल की, जैसे ब्राजील या उस वक्त की क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया हुआ करती थी। वो 80% के करीब उन्होंने मैचेस अपने जीते, टाइटल के बाद टाइटल अपने नाम किया, और वो बिलाशुबा एक टीम ऐसी होगी कि जिसको आप देखना चाहेंगे इस टूर्नामेंट के दौरान। जो हमारे नए फैंस बन रहे हैं इस फॉर्मेट को, जो समझना चाहते हैं, उनको बताते चलें कि 4 ग्रुप्स हैं जिसमें इन टीम्स को तकसीम किया गया है, और हर ग्रुप में से 2-2 टीम्स आगे निकलेंगी, जो कि एक तरह का सुपर 8 राउंड बनेगा, और फिर वहाँ से आगे 32 मैचेस बाद का फैसला करेंगे कि सेमीफाइनल जो कि 9 को, और उस एतवार से 10 दिसंबर को जो फाइनल में कौन सी 2 टीम्स आपस में टकराती हैं। लेकिन बड़ी तादाद में मौके तमाम प्लेयर्स के लिए, जो कि शायद पुराने फॉर्मेट में तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि वो इस लेवल पर खेलेंगे, जो सारी दुनिया में मैचेस को दिखाया जाएगा। पिछले मैच में हीरोज बनते हुए हमने देख लिए हैं, और एक मरतबा फिर ऐसा करके दिखाना होगा यहाँ पे खिलाड़ियों। सियालकोट स्टैलियंस का आपने जिक्र किया, 6 टाइटल उन्होंने बैक टू बैक जीते। उस सियालकोट की तो क्या ही बात थी, बहुत ही तगड़ी टीम थी वो। इमरान नज़ीर स्पेशली, जिस तरह के वो प्लेयर थे और जिस तरह की वो बैटिंग उस ज़माने से आगे बैटिंग किया करते थे, उनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था। और सियालकोट के लोकल प्लेयर ज़्यादा तगड़े थे, और एक साल तो अब्दुल रज़ाक भी वहाँ से खेले, मोहम्मद आसिफ भी खेले, अब्दुल रहमान भी खेलते हुए दिखाई दिए हमें सियालकोट से, राना नवीदुल हसन भी खेलते हुए दिखाई दिए। तो वो बहुत बड़ी टीम थी, वो कॉम्बिनेशन बहुत तगड़ा था T20 क्रिकेट के लिए, इसलिए उनको हराना बहुत ही मुश्किल था। अच्छे दिन थे क्रिकेट के लिए, T20 क्रिकेट के लिए स्पेशली, क्योंकि जब आप इमरान नज़ीर को खेलते हुए देखते थे तो वो वक्त से आगे बैटिंग किया करते थे, तब वो T20 का वो ब्रांड, वो फॉर्मेट खेलते थे जो अब प्लेयर्स विश करते हैं। सालों में बहुत कम ऐसा टैलेंट आता है जो इमरान नज़ीर इस तरह की बैटिंग किया करते थे। आज भी बहुत सारी फैन फॉलोइंग है उनकी, आज भी लोग बहुत उनसे प्यार करते हैं जिस तरह की उन्होंने बैटिंग तब की हुई है, क्योंकि तब एक अनयूजुअल चीज थी इस तरह की बैटिंग करना। पिकअप शॉट, टाइमिंग, फ्लिक, ये सब बड़ा शानदार था, और उम्मीद करेंगे कि सियालकोट स्टैलियन तमाम रीजन से मजीद इमरान नज़ीर मिल सके। अच्छी गेंद,
जो कि अपनी लाइन को होल्ड कर गई और इसको ऑफ स्टंप के बाहर रखा और मजबूर किया कि बैटर को कि वो सोचने के लिए जाएं कि अंदर आएगी या सीधी जाएगी। दोनों एंड से एक ही तरह की तकरीबन बॉलिंग है, लेकिन इस मरतबा अच्छा बाउंस लग रहा है कम से कम उस एंड से गेंद करते हुए। यहाँ बेहतर बाउंस है और बेहतर लेंथ भी है। थोड़ा लाइन आउटसाइड ऑफ स्टंप जरूर है, इसी को अगर आप थोड़ा स्टंप्स की तरफ ले आएंगे तो ज्यादा इफेक्टिव होंगे, लेकिन लेंथ इस पिच पे ये ज्यादा करामत है। स्लिप लेकर रखी हुई है और बाजार वहीं से एज निकलवाना चाहते हैं। इन कदमों के इस्तेमाल के साथ जवाब दिया है शॉट पे, और ये भी इंटरेस्टिंग होगा अली क्योंकि अभी मौसम बदल रहा है। पहले बिल्कुल एब्सोल्युटली ड्राई था और अब पिछले 2 दिन से ह्यूमिडिटी बड़ी हाई है। तो जिस तरह से सिकंदर ने टॉस में जिक्र किया कि हो सकता है कि ग्राउंड स्टाफ का ख्याल ठीक हो, और जो फैसलाबाद के कप्तान का खुद यह कहना था कि शायद उनको ना लगे कि ड्यू आए, लेकिन कहीं ना कहीं ये फैक्टर उनको हेल्प कर सकता है जो कि बाद में बैटिंग करने के लिए उतरेंगे। तो कम से कम इनको 170 की बियॉन्ड जाने की जरूरत होगी फैसलाबाद की बैटिंग देखते हुए। बॉलिंग शानदार गेंद पड़ने के बाद अंदर आई और असद ने इस मोमेंट को चुरा लिया है। ऑन की विकेट हासिल की, पेस और लेंथ दोनों में बीच हुए, कोई आइडिया नहीं मौजूद था उनके पास। शानदार डिलीवरी। भावलपुर रीजन को पहला झटका है, ऑन को वापस जाना होगा क्योंकि ये बॉल बहुत ही शानदार एरिया में गिरा है। बहुत ही कमाल का ये बॉल असद की जानिब से, और यही स्टार्ट एक्सपेक्ट कर रहे होंगे आसिफ अली अपने नए बॉलर्स के उनसे। और जिस तरह का स्टार्ट असद ने दिया है, बहुत ही शानदार डिलीवरी। बस यहाँ इसका ख्याल रखना है, यहाँ पे कोई मसला नहीं है, इसलिए जाना होगा ऑन को वापस। लेंथ सबसे की है, अगली इसी लेंथ की हम बात कर रहे थे। इस होल्ड अप किया अपनी लाइन को, बहुत सीधा रहा है, और इसी लाइन की हम बार बार बात कर रहे हैं, इसी लेंथ की बार बार बात कर रहे हैं। यहाँ पे अच्छा हुआ कि असद ने बहुत जल्दी उस लाइन और लेंथ को परख लिया है। 10 पर 1 ऑन वापस जाएंगे। अब्दुल हादी नए आने वाले बैटर हैं, और यहाँ पे मोहम्मद अली जो कि पाकिस्तान के टेस्ट प्लेयर है, उनकी गैर मौजूदगी में यहाँ पे भारी रोल निभाना होगा असद को, क्योंकि इससे पहले 4 डे क्रिकेट में हमने देखा मोहम्मद अली हमें नए बॉल से बॉलिंग करते हुए नजर आए। खुरम शहजाद जिनको अभी टेस्ट कॉल अप है ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए, वो भी फैसलाबाद से नया बॉल करते हुए नजर आए, इसलिए इनका जो रोल है वो बढ़ गया है। अच्छा स्टार्ट देना। अच्छी गेंद, शानदार डिलीवरी पड़ने के बाद एक मरतबा फिर अंदर की जाने पाई और बड़ा पेस जनरेट कर रहे हैं ऑफ द सरफेस। असद बैट्समैन को बीट कर रहे हैं। इससे पहले सेटअप किया था ऑफ स्टंप के बाहर गेंद करके, लेकिन शार्पली अंदर की जाने पाई और ऑन को कोई आइडिया नहीं था। बेहतरीन लेंथ, दिल लाइक किसी बॉलर के लिए शानदार नजारा फैसलाबाद की टीम के लिए इस बॉल के साथ। बेहतरीन ओवर मुकम्मल, सिर्फ 2 रन दिए और विकेट हासिल किया असद रजा ने। 10 पे 1। नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची, जहां पर लाइट्स ऑन है और बैक टू बैक डबल हेडर्स की ये बहाल जारी रहेगी इस वीकेंड तक भी, जिसमें 3 इंक्लोजर्स को ओपन किया गया है और अच्छी तादाद में लोग भी मौजूद हैं सेक्शन पैक क्रिकेट को देखने के लिए। कुछ सितारे हैं जो कि उतरे हैं, कुछ नए सितारे बनने की उम्मीद है, लेकिन खराब लाइन पे गेंद कर दी, बच निकले। फील्डर मौजूद थे शॉर्ट फाइन लेग पर, असद रजा बुल्सआई जाके गेंद हिट किया, रन बनाने के लिए न निकल सके। क्या अच्छा लफ्ज आपने इस्तेमाल किया कि बच निकले, क्योंकि ये बॉल बाउंड्री बॉल था, इसकी लेंथ बहुत फुल थी और लाइन भी बहुत खराब थी। लकी रहे कि बॉल सीधा फाइन लेग के फील्डर के हाथ में गया। आकाश जितने एक्सपीरियंस है हम इनसे बेहतर एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि इनके पास वो आर्ट है, वो एक्सपीरियंस है, वो वेरिएशन है, और स्पेशली भावलपुर जैसी नई साइड के अगेंस्ट इनको इस्तेमाल करना चाहिए इस वेरिएशन को।
उसने बहुत बार गेंद कर दी और आउट हो जाएंगे। एक और ऐसी गेंद पर जिसमें जहां चाहते खेल सकते थे, सिर्फ इंतखाब कर पाए वसीम आसिफ का, जिन्होंने इस आसान कैच को लेकर वसीम की इस रेजिस्टेंस का खात्मा किया। वकास मकसूद भी कामयाब। या बॉल एक बार फिर थोड़ा नीचे रहा है, टू एंड पे लगा बॉल। जिस तरीके से ये खेलना चाहते थे वो अपनी मर्जी से शॉट खेल नहीं सके। मिड ऑफ के फील्डर के ऊपर से खेलना चाह रहे थे लेकिन एलिवेशन नहीं हासिल कर सके। एक बार फिर थोड़ा वेट करना होगा क्योंकि अंपायर आजकल कंप्लीटली थॉरली चेक करते हैं। फ्रंट फुट नो बॉल। एक बार फिर कोई मसला नहीं, इसलिए वापस जाना होगा। रेजिस्टेंस जैसे आपने कहा उसका इख्तिताम हुआ। नीचे लगाया बॉल, फिर बॉल थोड़ा लो रहा है एज पर द लेंथ, इसी वजह से वो जो एलिवेशन है वो हासिल नहीं कर सके। वसीम को वापस जाना होगा 6 रन बनाकर 10 पे 2। अब यहाँ पे थोड़ा शायद अपनी स्ट्रैटेजी को, अपने प्लान को थोड़ा रिविजिट करने की जरूरत है। भावलपुर की साइड को आप पिच आपने अंदाजा लगा लिया 2 ओवर में। अब शायद ये ऐसा पिच नहीं है कि आप आते ही बड़ी हिट्स लगाएंगे या बड़े स्ट्रोक्स खेल सकेंगे। यहाँ पे आपको बारी लेनी है, लंबी इनिंग खेलनी है, एंड तक जाना है। हर बॉल को अपने मेरिट पे खेलना होगा, तभी आप रन कर सकेंगे। और अगर फखर जमान अपनी अप्रोच चेंज कर सकते हैं तो बाकियों के लिए तो मसला नहीं होना चाहिए। दिलचस्प है, कप्तानों का आम ख्याल यह था कि पिच अपना रवैया नहीं बदलेगी। लाइन और उसके साथ साथ एक्स्ट्रा का रन भी हासिल होगा। फैजान जफर आने वाले खिलाड़ी हैं जो कि अंडर 21 की कैटेगरी से शामिल हुए हैं, जहां पे आपको याद कराते चलें कि हर टीम में कम से कम एक खिलाड़ी जो कि 21 साल से नौजवान हो, उनको रखने का फैसला किया गया। एक अच्छी कॉल है ये देखते हुए। लेकिन दूसरी जाने भावलपुर की हमने आपको याद कराया कि मासवाई खिलाड़ी के तमाम टीम डेब्यू कर रही है और अब तक प्रूव नहीं कर सकी अपने मेटल को। बहुत ही स्मार्ट बॉलर हैं वकास, वो जानते हैं कि इन कंडीशंस में इस पिच पे कैसे बॉलिंग करनी है। और आखिरी जो विकेट हासिल किया उन्होंने वो इस चीज का सबूत है कि अच्छी स्मार्ट बॉलर है। अंदाजा है कि बॉल लो रह रहा है, इसलिए दूर किया बैटर से, वो इनवाइट किया कि फील्डर के ऊपर से खेलें, लेकिन उस तरीके से न टाइम कर सके न फोर्स थी। आसान सा कैच कप्तान आसिफ अली के लिए। तो दाद देनी होगी आसिफ अली और वकास की स्मार्टनेस की। लाइट्स ऑन है नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची में। यहाँ पर पहली मरतबा इंस्टॉल की गई थी 2000 में, जब वो फेमस टेस्ट मैच इंग्लैंड ने जीता था, जहाँ पर उस वक्त लाइट्स इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी। लेकिन उससे 2 महीने पहले यहाँ पर पहला ओडीआई इंडिया लाइट्स खेला गया था, जहाँ पर उस वक्त के हिसाब से बड़ा स्कोर किया था पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 305 का, जहाँ तक मुझे याद है, टारगेट दिया था। और एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने बड़ा एक रिमार्केबल चेज किया था। और उस वक्त पहली मरतबा ये पता चला था कि यहाँ पर ड्यू का भी कोई फैक्टर होता है, जो कि उस वक्त अपने हक में बदला था। क्योंकि उस वक्त तक पहली मरतबा जब आप अंडर लाइट्स खेल और ऐसे मौसम में आपने पहले ना खेला हो जिसमें आपको इस अंदाज की कंडीशंस का मुकाबला करना पड़े, तो फिर आमतौर पर ट्रिकी रहता है। वैसे भी उस जमाने में 300 सुपर का टारगेट बहुत ज्यादा कंसिडर किया जाता था, लेकिन बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वहां पर चेस किया था। तो देखते हैं कि आज इस तरह का कोई इम्पैक्ट आएगा। इरफान न्याजी जो कि बड़ा यादगार सीजन खेला था उन्होंने पिछला, T20 फॉर्मेट में इनके लिए अच्छा मौका होगा कि वो अपने पॉइंट को प्रूव कर सकें फैसलाबाद की स्ट्रॉन्ग टीम के साथ। सिर्फ एक वाइड का रन दिया और एक विकेट हासिल की वकास मकसूद ने। 11 पे 2 भावलपुर। भावलपुर की ये नौजमूदा टीम ने पहले ही गेम में मुश्किलात का शिकार। अब्दुल हादी और फैजान अब आए हैं ओपनर्स के जाने के बाद। बड़ा लंबा सफर तय करना बाकी है इनको, लेकिन लगता नहीं कि वो अभी बड़े स्ट्रोक की जाने छोड़ने के लिए जाएंगे। 2 नए बैटर्स हैं और वो जो पावर प्ले का फायदा आपको इब्तदाई 6 ओवर्स में हासिल हो पाता है, वो कुछ लो बाउंस और दूसरी जाने बड़ी शानदार बॉलिंग के बायस जो कि
असद ने किया, बैट्समैन को सेटअप करके उन्होंने बोल्ड किया, मुश्किलात लगेंगी। देखिए अकील, ज्यादा सोचना नहीं चाहिए यहाँ पे भावलपुर को, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी एक्सपोजर के लिए है, क्योंकि यहाँ पे उनको मौका मिला है बड़ी क्रिकेट खेलने का, बड़ी अपोनेंट्स के अगेंस्ट खेलने का, इसलिए ज्यादा घबराना की बात नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो अपने बैटर्स को पूरी बैटिंग करनी चाहिए, प्रॉपर बैटिंग करनी चाहिए, और जिस तरीके से प्रॉपर क्रिकेट खेलनी चाहिए। T20 क्रिकेट का प्रेशर नहीं लेना चाहिए, प्रॉपर बैटिंग करें, 20 ओवर खेलें और फिर सेकंड इनिंग में देखें क्या होगा। अच्छा रहा नहीं है, ये अच्छी क्रिकेट भावलपुर के दोनों बैटर्स की जानिब से, ये बेहतर अप्रोच है। आपको पूरे ओवर खेलने चाहिए यहाँ पे, ऐसा ना हो कि आप प्रेशर ले जाएं और बड़ी हिट मारने के चक्कर में आप अपने विकेट्स गवा दें, क्योंकि ये एक्सपोजर की बात है सारी। अगर हम ऑलरेडी बात करें 24 मैचेस खेल चुके हैं भावलपुर की टीम, इसमें से 10 जीते और 13 हारे हैं, 45% इनकी विन परसेंटेज है। लेकिन ये 2015-16 की बात है कि अब 6-7 साल से, इनफैक्ट 8 सालों से क्रिकेट नहीं खेली है बड़ी क्रिकेट, तो इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को आपने लर्निंग की तरीके से लेना है कि रिजल्ट जो भी हो आपने यहाँ से इस मैच से कुछ ना कुछ सीख के जाना है। तो सबसे पहला मकसद भावलपुर रीजन का ये होना चाहिए। एक मरतबा फिर प्लेस करके 1 रन के लिए भागे हैं, लेकिन इसी पे इत्तेफाक करना पड़ेगा। तजर्बाकार कोच हैं गुलाम अली, इनकी कोचिंग कर रहे हैं, जो कि इससे पहले सिंध की टीम के साथ वाबस्ता थे और उससे पहले भी उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कोचिंग की और टाइटल भी जीतने में कामयाब रहे हैं। तो लीडरशिप का रोल बड़ा अहम रहेगा, क्योंकि आमतौर पर जब आप मुख्तलिफ क्लब्स के खिलाड़ियों को यकजा करते हैं और उसके साथ एक टीम में इतने बड़े स्टेज पे खिलाने के लिए जाते हैं, तो फिर इमोशंस बड़े हाई होते हैं, जिसके साथ साथ आपको परफॉर्म भी करना पड़ता है। लेकिन कई मरतबा अपने टारगेट्स को रिविजिट करना पड़ता है, जो कि अब लग रहा है कि भावलपुर की टीम सेटल होने की कोशिश करी। गुलाम अली का आपने जिक्र किया, तो नेशनल T20 जीते थे सऊद शकील की कप्तानी में, कोच गुलाम अली थे। 2 रन की कोशिश है यहाँ पे, लेकिन अच्छी फील्डिंग, बहुत तेजी से अपना वो एरिया कवर किया, और जो भी यहाँ पे इस एंड से स्क्वायर लेग पे फील्डिंग करेगा वो सबसे तेज फील्डर होना चाहिए आपका। ये छोटी छोटी चीजें जो गेम अवेयरनेस में आती हैं कि आपने कौन से हॉट स्पॉट्स पे कौन से फील्डर खड़े करने हैं, तो ये इस एंड से अगर आप डीप स्क्वायर लेग पे फील्डिंग कर रहे हैं तो आपको सबसे चौकस और सबसे तेज फील्डर रखना होगा, जो कि दूसरे रन को रोक सके। आप बिल्कुल नहीं रुकिएगा अगर आप स्टेडियम आना चाहते हैं, फिर तो हफ्ते इतवार की आमद है। आप तो आइएगा नहीं, लेकिन आपके बगैर तो महफिल जज नहीं सकेगी, लेकिन तमाशाई होगी। अच्छी बॉलिंग खींच के अपनी लेंथ को उन्होंने एडजस्ट किया, देखते हुए कि बैट्समैन कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी जानिब अच्छी प्लेसमेंट की है, कम से कम डॉट बॉल्स को अपने ऊपर तारी नहीं किया, तो अच्छी कदम ब कदम वापस रिकवरी की कोशिश भावलपुर की। ये बेस्ट इस वक्त भावलपुर की टीम कर सकती है कि आप रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक करें, क्योंकि बड़े हिट उतनी आसानी से लगेंगे नहीं, आते ही बॉल थोड़ा लो रहता है। इसलिए जैसे मैंने पहले कहा कि यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जाएं, रिजल्ट बात की बात है, लर्निंग होनी चाहिए। अच्छा ओवर मुकम्मल, 4 के बाद भावलपुर 15 पे 2। Not an easy situation for the Bahawalpur team with 10 debutants coming in against a very strong team. Not only is there a lack of experience, but also when they come in expecting a belter and find a wicket which is not so easy to bat on.
The ball is coming a bit slow. There's Shamil Hussain in the center with a grey t-shirt, the under-19 boys. They played in the PJL. Talat Hussein's son, famous television personality. Another very good player next to him, Ubaid Shahid. Good batter there. Played Bawalpur, who was the captain. Oh, no. That's just releasing so much pressure that is being deployed on the batting side. Fielding has been a matter of concern for all the teams which have played here so far. Interesting decision taken by, well, I wouldn't say it was a decision taken by the Bawalpur captain, but on asking him, what would you have done had you won the toss? He said, I would have batted. I don't know how much of the first game they were able to see. They must be travelling to the ground. Yes, the scores were 170, but the ball has kept low. It wasn't really easy to hit those big shots. Even Fakhr Zaman couldn't get into that top gear. Look at that again. It's gone high in the air. Mid-on will be the man they'll be looking at. Gone. Exactly what we're talking about. Lack of pace. Going through with a shot, hitting high on the bat, and Waqas will surely be the man who will be tough to handle on a surface like this, because he can mix it up into the pitch, will bowl slower ones, and that's the third one gone. The experience of the Faisalabad bowler showing, and the inexperience of the Bhavalpur batsman showing. Not an easy surface to bat on. Someone from the dugout has to tell them. Now it has to be more of rebuilding process. You see the ball not coming onto the bat again, through with a shot, and the only thing he could do was to balloon it to Asif Ali. Abdulhadi goes for 6, it's 20 for 3. That was a good shot. Moinuddin just in, times it beautifully. A bit of space given to him outside off stump. He utilizes it. Yeah, I'm being told by a statistician that he is the only player who's played T20 before this, which means out of the 10 debutants, he is the only one with the game. That's a bit of a challenge for the commentators. I mean, I don't know how many times it has happened in world cricket. We got 10 debutants, never seen them play before. But it's a good-looking shot. It just leaned into it, opened the face, and not fussy about that shot, just timing. And this outfield is rapid, no dew. It will not be sluggish. It's bone dry outside. Full toss slipped out of his hand, probably on him a single. So we're just talking about debutants in a side. Back in 2004-5, Multan Tigers versus Karachi Zebras, two sides that played 22 debutants. Thankfully, I wasn't commentating in that. 22 debutants. That's the wicket. Went high in the air. Some good catching. Asif Ali, with his experience, kept himself still right underneath. So important to get into good positions early and not take a catch on the move.
hasn't been easy to time the ball, but what we have seen so far is that is most probably the only option. If you try to hit too hard, it never comes off. So you're better off just trying to time it. And most of the fours that we've seen in the previous match and this one were the ones that haven't been hit too hard. You just saw that picture with those spectators. They're not mere spectators. Yes, they are watching the game, but they are cricketers themselves. The tallest guy, fast bowler. He was the bowler of the tournament with the PGL, Mohammad Zishan, one in the grey t-shirt, the tall one. He's very tall. Hit the ball. He can hit the ball a long way as well. Seen him hit some huge sixes during the season. Once again, misfielding. We're still inside the power play, 2 more balls to go, but wickets column is not supporting or favouring Bhavalpur. Hopefully, as the tournament goes on, we'll see some improvement in the fielding department. Because at the moment there is no dew. The ground is quite even. Even then, the standard of ground fielding is not what is desired actually. Pitching outside leg. Not much you'll get from the umpire on that appeal. End of the power play, it's 28 for 3. In modern day cricket, we talk a lot about the power plays, how important the first 6 overs are in a T20 game. But then you have wickets like these in a local tournament, which also I think is a learning curve, helps the youngsters to figure out ways to get to a total which they can defend. Helps at times at the highest level as well. Sadakat Ali, 4 matches, 2 wickets, 31.50 is the average. Takes a lot of work for a batting side losing 3 in the power play to recover. T20 format allows you one opportunity to come back into the game, unlike the longer formats. A big over here and there can get you back into that run rate, then you ignore that wickets column for a while and then start focusing on a total that you want to get to, maybe 150 plus. And sometime in the innings, one player or two need to take the fight back to the opposition. You can't just be bogged down. It's not about playing the full overs and ending up in 90 odd. Once again, these are big pockets there, not on this occasion, but you can eye 2s and 3s and put pressure. You're absolutely right, Sikandar. The intent has to be there. Intent to score runs, to set a good total, try and win this game.
player who's played T20 can afford to do all this. Move the side screen. He's the only one who is not on debut. Bit harsh on these youngsters. 10 of them on debut and on television. Sweeper cover will come around and it'll just be a single. It's 31 for 3. Power play, some lucky shots here and there, then this beautiful delivery that held its line, and then it was all Faisalabad. The wickets tumbling, a few lucky boundaries as well. Misfield, last wicket. Once again the ball not coming onto the bat. Beautiful 4. Misfield again. Mohammad Faizan is the new bowler. You just look at the power play. I won't even call it a mixed bag. Apart from those two missed fieldings, just predominantly belong to the fielding side. And I think they've understood the conditions very well, especially Waqas Maqsood, who's this very seasoned campaigner, and he knows, has got good experience. Had a little chat with Salman Bhai before the start and just asking opinion for what the pitch is like. And something that will suit his style of bowling, because he can vary his pace and then keep it within the set of those stumps and earn the rewards. And it's not necessary that wickets should show against his name. If he can build pressure from one end, the other side, the bowler, where the batting would try to score against, will get the wickets. It's the sort of wicket where you need to play some conventional cricket. Quick run there. Either you play some proper cricketing shots, or then otherwise, if you are a player who completely takes the pitch out of the equation, someone like who's got a better reach, you go international level, Andre Russell, Aaron Pollard, those guys just take everything out of the question, the conditions, because the stride is so big, the way they stand, high back leg, they've got a sledgehammer in their hands. It becomes very difficult for the bowler, because their arc and their zone is very big for that power hitting. Maxwell does that, he moves around so much, and it just becomes difficult. He just throws the ball off his length. Good shot there, went straight to, and yes, you're absolutely right, but the players you're talking about, Sikandar, are players with exceptional talent. That's a good hit. The minute it went onto the bat, you could know that it's going all the way. It's as clean as you like. First 6 of this innings of the match. And that's what you would expect of the player who's played T20 before. Maximum to end the over. Is 41 for 3 after 8. मजीद रन हासिल होंगे, लेकिन इसके साथ साथ रिकवरी के फेज से बड़े एफिशिएंटली गुजरना जरूरी बहावलपुर की टीम के लिए, जहां पर उन्होंने
रिकवरी की जरूर है इस प्रोसेस के दौरान। पिछले ओवर में फाइनली वो पहला मैक्सिमम हासिल करने में कामयाब रहे। इनके नीचे आगे स्ट्रॉन्ग हिट लगाई, बड़ा टर्न मिला है, लेकिन एच जिसकी तवक्को कर रहे थे, सदाकत वो तो नहीं हासिल हो सकेगा, लेकिन बीट जरूर किया। दूसरी तरफ टेंशन लग रही है सलमान और फाइनली भावलपुर के बैटर्स के जहन में। मजीद रन हासिल होंगे, दूसरे रन के लिए भी वापस आना चाहते हैं, लेकिन एक पे इत्तेफाक करना पड़ेगा। पार्टनरशिप की जरूरत है यहाँ पे कि 3 विकेट्स गिर चुके हैं और मोमेंटम अभी तक इनिंग्स में नजर नहीं आ रहा है। नौ स्मूदर टीम है सलमान, और इसमें आपको शायद वैसे सीनियर पार्टनर की कमी महसूस होती है जो कि आपके गेम को लेकर चल सके। लीडरशिप इनके पास कोचिंग स्टाफ में जरूर मौजूद है, लेकिन जो पार्टनरशिप में चाहिए होगी वो बैटर करेगी। रन हासिल होंगे और गैप में निकालने में कामयाब हो गए। अच्छी हिट, गैप में खेले, विद द टर्न, 4 रन हासिल। ये अच्छी शॉट थी, ऑस्टिन से बाहर शॉर्ट बॉल थी, उसका पूरा फायदा उठाया मोइन ने, और मोइन ने पिछले ओवर में भी एक सीधा छक्का लगाया और थोड़ा सा मोमेंटम मोइन की इनिंग में नजर आता हुआ। ये देखिए बैकफुट पे रहे, लेंथ को जल्दी पिक किया उन्होंने और पूरा फायदा उठाया। जरूरी है मोइन के लिए, क्योंकि ये इस टाइम अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं, अच्छे टच में है कि पूरे ओवर्स तक जाएं और इनके यंगस्टर्स खेलें। ये तो सारी टीम ही यंग है, किसी एक पे जिम्मेदारी आप डाल ही नहीं सकते। 10 डेब्यू है, 9 ओवर से अख्ताम, 48 पे 3। कदमों का इस्तेमाल किया और दायरे के ऊपर से खेलने में कामयाब रहे हैं। बड़ा चेज होगा वहां पर फील्डर के लिए जब तक पहुंच पाएंगे। अबू बकर 2 रन हासिल करने का मौका निकाला। गो कि अब तक कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी टारगेट की जानिब नहीं जा रहे, लेकिन पिच का रवैया अब चेंज होता हुआ लग रहा है। 50 तक पहुंच गया 10वें ओवर की शुरुआत में, रिकवरी जरूर की है, लेकिन गेंद खासी नीचे रह रही है इस मैच के दौरान। सलमान कदमों का इस्तेमाल और फिर बड़ा चेस, लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे इस मर्तबा। गैप में खेले 4 रन के लिए। ये अच्छा स्ट्रोक है, कदमों का इस्तेमाल दूसरी बार लगातार किया इन्होंने और इस बार ज्यादा अच्छा कनेक्शन था, अच्छी टाइमिंग और कोई मौका नहीं किसी फील्डर के लिए। ऑल्दो के कवर और हेड ऑफ जो है वो दायरे में है, बट स्टिल देखिए बहुत ही अच्छा स्ट्रोक है, मिडल हुआ है पूरा। और फैजान ने इस बॉल को पेस के साथ किया था। पिछला बॉल जो था वो शायद चेंज ऑफ पेस था जिसकी वजह से टाइमिंग नहीं थी, लेकिन इस बार तेज बॉल था और तेज ही बाउंड्री की तरफ गया। फील्ड में तब्दीली की है, थर्ड मैन की बाउंड्री पर मौजूद थे जिनको अब दायरे के अंदर लाने का फैसला किया है। रीजन अभी भी खाली है कवर्स का, वाइड एंड लॉन्ग ऑफ पे एक फील्डर है। अच्छा कमबैक किया इस गेंद पे फैजान ने, सीधा खेलने में कामयाब रहे फैजान के खिलाफ फैजान, और अपने फॉलो थ्रू में रोका। ऑफ साइड पे दोनों फील्डर्स जो हैं वो दायरे के अंदर है, बिहाइंड पॉइंट थर्ड और बैकवर्ड पॉइंट। स्लोअर वंस पर रिलाय करेंगे, इसका मतलब है एक और स्लोअर वन। यकीनन जब आप का फाइन लेग और थर्ड और कवर बैकवर्ड पॉइंट दायरे के अंदर है तो चांसेस ज्यादा यही है कि बॉलर कटर्स करेंगे, स्लोअर वन करेंगे। बैटर को प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। फील्ड जो है बहुत सारी बॉलिंग को पहले से यहाँ कर देती है कि प्लान क्या है बॉलर का, लेकिन ऐसे में एक्सपीरियंस बहुत काउंट करता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक टीम में 10 डेब्यूटेंट्स हैं, मोइन इनके सबसे तजर्बाकार प्लेयर हैं। तेज रनिंग, बड़ी बाउंड्री है जिसपे अच्छी पोजीशन में थे फील्डर इरफान न्याजी, जो कि बाउंड्री पे मार्च नहीं कर रहे थे, आगे थे, जिसके बाद उनको दूसरे रन देने का खतरा नहीं मिला और सिर्फ एक ही रन पे इत्तेफाक करना पड़ा। लेकिन एक डिसेंट रिकवरी है। फैसलाबाद ने आज रह के बॉलिंग करने का फैसला किया था और अब तक उस फैसले को ठीक साबित किया इनके बॉलर्स ने।
चौके के बाद अच्छा कमबैक फैजान का। आधे ओवर्स मुकम्मल, 57 पे 3 राहुल को। बैकफुट एक मरतबा फिर रन हासिल करने की कोशिश करेंगे, जो बहावलपुर के लिए बड़ा मौका है। सलमान गोके उनके खिलाड़ी अब तक देखना होगा कि कैसे लिव अप कर पाएंगे तवक्कुआत पे, लेकिन जिस तादाद में इनको बड़ी तादाद में डेब्यूज करने का मौका मिला है वो शायद किसी दूसरे सिस्टम में मुमकिन ना हो पाता। अच्छा मौका है यंगस्टर्स के लिए, जहां पर 10 डेब्यूटेंट्स हैं, जाहिर है उनके लिए एक बड़ा एक्सपोजर है। टेलीवाइज्ड गेम है ये, और नेशनल T20 कप एक बड़ी स्टेज है। PSL के बाद अगर कोई T20 फॉर्मेट के अंदर स्टेज है तो वो नेशनल T20 कप है। और यहाँ पर बोल्ड हुए एक बॉल जिसको बहुत जोरदार हिट लगाना चाहते थे, लेकिन बिल्कुल स्लो वन था और बोल्ड हुए, बिल्कुल कनेक्ट ना कर सके। बॉल नीचे भी रह रही है, ऐसे में शॉट ओवर एम्बिशियस था ये वाला। फैजान ने पिछले चंद ओवर से ठान के रखी थी कि वो बड़े शॉट के लिए जाएंगे। सदाकत जो कि बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे कोई मसला नहीं होगा और इस लंबी वॉक को कंटिन्यू करना पड़ेगा फैजान को। शानदार टर्न भी हासिल हुआ जो कि पड़ने के बाद स्टंप्स की लाइन में आई और मुकम्मल तौर पर बीट हो चुके थे। कोई दूसरी लाइन ऑफ डिफेंस नहीं थी, कश्तियां जला दी थी फैजान ने। पार्टनरशिप बनी लेकिन पनपने से पहले टूट गई। 18 मैच आउट। $59 for 4। शहरियार नए प्लेयर है, नए बैटर अंदर आए हैं और मोइन को जरूरत है कि दूसरे एंड पे कोई उनका साथ दे, थोड़ी पार्टनरशिप को एक्सटेंड करे। जैसे ही मोमेंटम बनने लगता है, ये इनएक्सपीरियंस शो करती है चीज कि वहां पर एक गैर जरूरी स्ट्रोक खेलते हैं और इस बात को बिल्कुल खातिर में नहीं लाते कि सामने मोइन सीनियर हैं, वेल सेट हैं, उन्हें सपोर्ट की जरूरत है। यंगस्टर्स हैं, वो इस स्टेज पे एंजॉय भी करना चाहते हैं, अपनी स्किल्स दिखाना चाहते हैं। शहरियार इस बॉल पर लेग बाय होगा, अंपायर के सिग्नल का वेट और ये सिग्नल लेग बाय का। सदाकत जो एक आउट कर चुके हैं 12 रन देके अपने तीसरे ओवर में है, काफी एक्सपीरियंस बॉलर लगते हैं ये। शहरियार आने वाले बैट्समैन है जिन्होंने रिप्लेस किया फैजान को। एक्टिविटी थी फैजान की इनिंग्स में जो कि मोइन का साथ निभा रहे थे, लेकिन उसके बाद एक मरतबा फिर ये शराकत जब लग रहा था कि सर उठाएगी, उसका खात्मा किया लो ट्रेजेक्टरी के साथ गेंद और तजर्बे का भी जो कि सलमान जिक्र करने लगता है कि फायदा उठाया, कदमों का इस्तेमाल किया था, लेकिन पीछे कश्तियां जला चुके थे। 11 ओवर्स मुकम्मल, कामयाब ओवर का सदाकत का 61 पे 4। हाई स्कोरिंग गेम था पिछला, जिसमें 178 रन चेस करने में कामयाब रही दूसरे नंबर पे बैटिंग करते हुए, लेकिन यहाँ पर उसके मुकम्मल बरक्स नजर आ रहे हैं आसिफ अली की कप्तानी में। और ऑन साइड पे बड़े शॉट के लिए गए जो कि घुमाना चाहते थे, लेकिन शायद अभी बहुत वक्त है और मोइन सीनियर पार्टनर है सलमान, इनको शायद अभी ये वक्त नहीं आया कि इस अंदाज के शॉट पे गए। देखिए मोइन
ये एक बात बड़ी आया है कि ये लेग साइड को फेवर करे। हालांकि कवर जितनी ऊपर खड़ी है और शॉर्टर बाउंड्री ऑफ साइड है, विद द एंगल अगर स्ट्रोक खेलें कवर के ऊपर से तो ज्यादा चांस है। मिड ऑफ भी दायरे के अंदर है, सिर्फ एक फील्डर बाउंड्री पे है फ्रंट ऑफ स्क्वायर, और ऐसे में वो बड़ी बाउंड्री के ऊपर जाना चाह रहे हैं जहां पे 3 फील्डर्स पीछे हैं। रन एक ही बने। एक बार फिर ऑन साइड को फेवर किया, जबकि एंगल प्रोवाइड हो रहा है जिसको अगर वो खेलना चाहे मिड ऑफ या कवर के ऊपर से तो आसानी के साथ खेलना चाहिए हमें। यही वो प्री मेडिटेशन है जो बैटर को रिस्ट्रिक्ट करती है, उसको लिमिट करती है। शहजाद अपना दूसरा ओवर फेंक रहे हैं। अब तक सिर्फ 4 रन दिए इन्होंने। अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। लंबे रनर के साथ गेंद करने के लिए आते हैं। फील्डर ऊपर मौजूद हैं और एक मरतबा फिर सिंगल के इस मौके को जाने दिया। भावलपुर ने ग्रेड 2 क्रिकेट में 3 मैचेस जीते हैं अपने पूरे मैच, तो ये एक अच्छी टीम की निशानदेही करती है चीज़। लेकिन डेफिनेटली ये जो फॉर्मेट है इसका एक्सपीरियंस नहीं है इन यंगस्टर्स को, और यहाँ पर इनके लिए सीखने का मौका है। अपने से जो अच्छे प्लेयर्स हैं, अच्छी टीम्स हैं, उनको देखें, और खेलने से बेहतर कोई मौका नहीं होता सीखने का। खूबसूरत ड्राइव, सिर्फ एक ही रन बनेगा। इस भावलपुर की टीम में तो 10 डेब्यूटेंट्स मौजूद हैं, लेकिन फैसलाबाद ने आज कैप दी है शहजाद गुल को, और उसके साथ अब्दुल समद भी अपना पहला मैच खेलने में कामयाब रहे हैं। शहजाद जो कि बड़ा मौका है इनके लिए, इस एक्सपीरियंस टीम के साथ नौजवान क्रिकेटर्स को शामिल किया जा रहा है। और फैसलाबाद की जो कि तारीखी तौर पर T20 फॉर्मेट की एक बड़ी कामयाब टीम समझी जाती है, उसकी जानिब से खेलने का मौका मिलेगा। और ऐसे खिलाड़ी जो कि पाकिस्तान कप में खुर्रम शहजाद वाला की मौजूदगी में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, उनके कैसे बूट्स को फिल करेंगे देखना होगा। खराब गेंद कर दी और उसका शरिया फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन फाइन लेग में फील्डर मौजूद है, उन्हीं की जानिब जाएगी। दूसरा ओवर मुकम्मल करेंगे शहजाद। अच्छी गेंद बांध के रखा है बैटर्स को। शरियार अब तक सिर्फ 1 रन बना पाए, 64 पे 4 भावलपुर। Will it be called for the third umpire? Probably they are having a look. Really struggling here, Bahawalpur. That's understandable. Very big stage for most of them. Probably the biggest of their career. Have to wait for the third umpire. No issue on this side of action. Wait and see if that back foot did drag out, and if it did it come back in time? Good time. Say a very good evening to Sikandar Bakht in the comm box. Good evening to you. Just having a look square to the wicket as to what happened. Third umpire interested in having a second look. Seems alright. That back foot never left the crease.
One of the very easy decisions for the third umpire. 64 for 4 into the 13th over. And it's the second match on this trip. What should be a good total from here for Bahawalpur to make a match out of this? Easy. Wheels are already off. Umpire. Moin will survive this, and he does. Chance. Correct hit. Chance. Going upstairs once again. He just looked at the batter is struggling here. Desperate run attempted there between Shehryar and Moin. And the fielding side looks very, very confident. Once again, over to the third umpire. It's terrific work by the wicketkeeper. It rolled off the pad, didn't go too far. But the wicketkeeper had to pick up and turn around. And just stump and a half to aim at 10 yards out. No. Wow, all those reactions suggested that the batter would have been shot, but that's good technique here. Really drag that arm and use his full extension and beat the throw from the wicketkeeper. It's very strange how reactions are misleading. Waqas Maqsood and all the others were like, yeah, ho gaya, ho gaya. But he's all the way in. Right, that strange reaction from the wicketkeeper was instant. Ali Shan, Waqas Maqsood, who was coming from 45, short fine. The batter was in very, very comfortably. You have another look. There you go. That reaction would suggest that he was well out. That's in there. Just over the top of the fielder. Good work in the end. 3 runs. Bahawalpur desperately needs some luck and some runs, no matter how they come. Moin being the key here for them, 28 of 25 at the moment. Nice work done, just flicking off the ball. Saving one for the side. Nothing fancy. Just regulation cricket from Moin. He's holding the innings together. 13 done. 16-9 for 4 Bahawalpur. Moin, 29 of 26 is the key here in the remaining 7 overs. Like I said many times, there's 10 debutants in this Bahawalpur innings. Bahawalpur side, I should say. Local toss, just a single. Not really easy for all these youngsters to just come to this big stage and perform accordingly. Today is the first day of the tournament. Talking about
some big encounters. Earlier on, we had a very exciting game between Multan and Sialkot, two really powerhouse of a teams. And Sialkot won that in a super over. After Multan at one stage were in the driver's seat. If you look at the format of this tournament, Sikandar, this group has 4 teams. We've already seen Rawalpindi and Ahmedabad, and now Faisalabad and Bahawalpur. And on the face of it, it looks like between Rawalpindi, Faisalabad and Ahmedabad, 2 teams are likely to progress. What would be your pick if I have to ask you at this early stage? Rawalpindi did win the match, but I really feel that their opponents were a little better than them in terms of the overall look at the match. And again, you've seen that so many times today. When you try to pull, the ball doesn't have that much height, it goes under the bat. There is a slight lack of bounce. Earlier, Umar Amin missed one. We saw one of the batters of Zaman Khan's bowling chopped it onto the stumps. That's a good ball. That's a good ball. I don't know where it's pitched, but it's been given out. It did hit adjacent to the stumps. Just fell for a moment, pitched outside leg, but the umpire says it's gone. That's wicket number 5. So the batter was quizzically looking at the umpire, Moin, who was well set. Were there 2 sounds? The umpire will check the no ball first. There's no issues here. Left arm over the wicket. That's the first thing the umpire would need to make sure, that if it's pitched in line, it was pretty marginal. It was angling away. It didn't straighten. That's another decision that umpire had to make. He raised his finger pretty quickly. Looked very convinced. And half the side is now back in the hut for Bahawalpur. Moin gone for 30. 71 for 5. Let's have a look at it again, the leg before decision. You try to freeze it at the point of contact the ball of the pitch. Where did it pitch? Just seems like somewhere around the leg stump line, half the ball out. But we'll get a better idea once we pause it. Left arm over. It's been given leg before. Yeah. There's a couple of things, Sikandar. If it did pitch in line, then there's a good chance it will be missing, because that ball didn't straighten back into the right-hander. It was leaving the bat. But if it was hitting the stump, then there's a good chance it would have pitched outside the leg stump. We'll have another look. Marginal, and then just hits the knee roll on the way. Impact is in line. Don't know where the trajectory takes it. 72 for 5. For 5. Clearly, Bahawalpur have to get up to 130 here for the challenge to Faisalabad. Not going to be easy from here. Lost 5 wickets so far.
Lack of partnerships has really hampered this Bahawalpur innings. That was a peach, an absolute peach. He was bowling big in swingers and that one straightened down the line. Soft dismissal. We've seen hitting through the line has been a problem here at this National Bank Stadium pitch today. Sadakat has been good, and this was the last wicket of Moin, who was batting well, 30 of 29. That's the point I was making, lack of partnership, Sikandar. Well, yes, they have lost wickets in quick successions. 10, wicket number 1, 10, wicket number 2. Wicket number 4 and 5, direct hit and gone. No, he'd given up completely. He had all the time in the world to aim and throw because the batter had given up. Could have done a better job there. Sometimes it's not a bad idea to just field the ball and throw in the same flow. He just tried to slow himself, tried to take aim. He had more time than that. Look how he slowed down. Just 10 yards out probably. Admittedly, he was only aiming at one stump. Yeah, ideally what he could have done is, knowing that the batter has given up, he could have run towards the stumps and get as close as possible and do an underarm. But that's a fraction of a second decision from a fielder what he wants to do. Kazan was the fielder on that occasion. If you look at that replay again, you know in the corner of your eye as a fielder that the batter is nowhere close, he's not coming. Underarm just getting closer like Jaunty Rose like. So yeah, they've lost wickets in quick succession, 1 and 2 falling at the score of 10, then 59 and 79, 71 for wicket 4 and 5, not much of a gap. And we're not really sure with 10 debutants what kind of bowling they have. How good can they defend a 130 score? Experience counts for a lot in this game. No runs on the board might give them some confidence and a couple of early wickets. You know, it's a funny game. But for them to do that, they need to first get there, which is not easy. Take that. Where did that come out from? They need more of those. Just landed probably inside the fence. But innovative stroke. Good to see. Yeah, scooping that, getting in good position quickly, just when the bowler is in his delivery strike. This can go either way. On this occasion, good connection. Just came out of nowhere, but they need more of that, like I said, and that will put the bowler under a little bit pressure. Went for the slower bouncer into the pitch, misdirected though. मोटर चला देना. Not able to find the gap even with a full toss on offer. It's been a bit of jet lag innings. This hasn't really taken off. No momentum, partnerships missing. First outing.
certainly feel that the sides will get a good idea of how the surfaces are on the square. Correct those mistakes, get onto the drawing board fast and quick. No gaps in here, every day there, plenty of gaps. 4 different venues. 81 for 5 after 15. TNT कॉलोनी के नाल ओपरा जितनी दूर हाँ हाँ दिखाई दिया मैं आपको लेके जाएंगी और क्या है और बड़ा खूबसूरत मिले ना ऐसे कपड़े देखने लगे ऐसे इसमें मैंने तो ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਰ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਘਰ ਨਾ ਮਿੰਟ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹੋਰ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾ ਕੇ ਗਈ Plenty of games happening every day in this first phase. ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਸਮ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਬੈਠੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ 2 matches coming your way from National Bank Stadium every day. ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਖਾਦੀ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਖਾਦੀ ਐਸੇ ਡਰ ਨਾਲ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ We've seen Group C today. All 4 teams. ਗ੍ਰਾਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਦੀ ਉਹ ਵੀ ਖਾਦੀ ਫਿਰ ਗੈਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰਨਾ ਗਰਮ ਬਾਤ ਫਿਰ ਭਾਈ ਅੱਧੀ ਗ੍ਰਾਫਲਾਂ ਖਾਦੀ Again, spaces way in the deep mid-wicket zone region. Easy two there. चलो बंद कर दे इसको You might have heard from the stump mic. Ali Shan, the wicket-keeper, telling his deep fielders on the onside, stay in 10 yards, 5-10 yards in, because huge boundary on that side. ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ The ਗ੍ਰਾਫਲਾਂ University Road and hitting into the onside is 82 meters, ਜਾਂ ਚਾਹ ਹੀ ਪੀ yards rather. ਖਾਲੀ ਚਾਹ